Hello, Namaskar. This is Sushant Chopra from Elegance Veneers, and welcome to the show named Aki Chats. Today, we have a great personality in house named Sanjay Pabari, a great human being with lot of projects, lot of humbleness, and lot of innovation. Thank you, sir. Thank you for being on show. We welcome you. My pleasure. आपने आर्किटेक्चर चूज़ किया, ये आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, बट ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? एक होता है ना कि बाय डिफॉल्ट माय फादर इज एन आर्किटेक्ट राइट, एंड ही इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू आर्किटेक्ट्स ऑफ आई वुड से नासिक एंड महाराष्ट्र. राइट. तो पहले होता था कि भाई आर्किटेक्ट का लड़का आर्किटेक्ट, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर. तो इट वाज इम्बाइब्ड इन मी व्हेन आई वाज वेरी यंग कि बस यू हैव टू कैरी ऑन व्हाट योर फादर हैज स्टार्टेड. राइट. But actually the interest started when I was, in standard 10th, 11th. जब भी during my vacation I used to go to my father's office. फिर वो ड्राइंग्स बन रहे, तभी तो मैन्युअली ड्राइंग्स बनते थे, बड़े बड़े शीट पे काम होता था. तो आई वॉज वंडरिंग कि यार यहाँ पे कर रहे, फिर बन कहाँ रहा है. और थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की इच्छा होने लगी. राइट. And then after 12th, of course, by the time I finished my 12th, I was very sure that I want to do architecture. That's great. वहाँ से शुरू बहुत किया. ही कम उम्र में आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है. दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. Sir, like you started practice, I think 25-30 years ago. It is 25-30 years that you're practicing in Nasik. And वो टाइम पे जब आर्किटेक्चरल चीज़ें सोचते थे या समझते थे, और आज जो सोचते हैं 2025 में, सो आर्किटेक्चरली कितना बदला है सर ये फील्ड अपना? बेसिक्स नेवर चेंज. राइट. 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले भी आदमी को घर ही बनाना था. आज भी घर ही बनाना है. राइट. इंसान वही है, उसके नीड्स ऊपर नीचे हो गए हैं. एनवायरनमेंट वही है, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करके काम करना है. बस अगर वो एंगल से हम देखते हैं तो बेसिक ऑफ आर्किटेक्चर हैज नेवर चेंज्ड. हाउ डू यू लुक एट स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट बिल्डिंग सर? ये जो बड़े बड़े नाम हम लोग सुन रहे हैं आजकल, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू यू कि आप कैसे देखते हो ये सब चीज़ों को? I look at a building as a human being. So when I say this guy is a smart human being, I would say something similar to that this building is a smart building. Now, who is a smart human being? A smart human being is someone who will adapt to the immediate things. Right. It will react to the immediate things. अगर मैं बोलूँगा आप smart हो. Why are you smart? Because you are adapting to the modern things. You are adapting to the needs of the society. You are adapting to the need of the environment. You are adapting the need of the user. You are adapting. Right. Similarly, the moment my building starts adapting to my needs, to my environment, it will start becoming smart. स्मार्ट. सर, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने इतने बिल्डिंग्स किए हैं, आपने नासिक को एक अलग, ऑफ कोर्स एक यू आर वन ऑफ द पिलर ऑफ नासिक आर्किटेक्चर. Thank you. सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ नासिक आर्किटेक्चरल वाइज? एंड आपके सपनों का शहर मैं बोलूँ, या व्हाट इज़ योर आइडियल सिटी यू आर इमेजिनिंग कि कैसा होना चाहिए सर? व्हाट इज़ योर आइडियल इमेजिनेशन अबाउट अ सिटी? It's a difficult question. Honestly speaking, it is a difficult question because, again, as I told you, if I am looking at a building as a human being, then I am looking at the city as a family. Right. Where so many human beings are there. And all the members of the family cannot be one. It cannot think in one direction. अपने हर फैमिली के मेंबर्स को हर एक बिल्डिंग का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होगा, अपना एक प्लेस होगा, अपना एक फंक्शन होगा जो परफॉर्म करेगा. द मोमेंट द सिटी परफॉर्म्स इट्स गिवन फंक्शंस, इट बिकम्स आइडियल. राइट. कंप्लीटली अग्रीड सर. एंड इतना काम करने के बाद, इतना सक्सेसफुल होने के बाद, आपके मायने में या इन योर टर्म्स
how is success according to your terms? Is it materialistic और अच्छा काम आपका अच्छा success है, या how do you judge success? My client's satisfaction, recall value. If after 5 years my client picks up a phone and calls me, sir, how are you, wishing me on my birthday or wishing me on my whatever achievement I have done, or just calls me. The other day my client of 10 years old called me, he said, I want to change my sofa, could you help me choose the color of the fabric? That was it. That is for me success. Wow, that's really amazing. सर, आपके प्रोफेशनल करियर में और आपके पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो? लाइक, बिकॉज आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज मैम इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट. तो घर में आप जब घुसते हो या घर जब जाते हो तो घर पे भी डिज़ाइन का डिस्कशन होता है, क्लाइंट का डिस्कशन होता है कि क्या होता है? लाइक, हाउ डू यू बैलेंस योर प्रोफेशनल करियर लाइफ? That is a family of architects and interior designers. My father से लेके my daughter तक, everyone is into this field. So, but obvious, we talk about it. Right. We live. And right from the dining table, while having cup of tea, or while going out for a movie, or while going out for any functions, the conversation will always be punctuated by architecture and interiors. Always. And yes, sometimes it does happen that कुछ ज़्यादा हो गया. We see that, sir, because you're a happy-go-lucky man and a royal personality. And sir, I think, sir, I have been knowing you from last 8 to 10 years. जब हमने विनियर्स का काम या when I entered this line, and जिस दिन मैंने आपको देखा था, जिस दिन मैं आपको इनविटेशन देने आपके ऑफिस पे आया था कि वी आर ओपनिंग स्टोर, एंड उस दिन भी आप सेम थे, आज भी आप सेम है. तो ये हेल्दी फिटनेस एंड एवरीथिंग एंड बीइंग एन आर्किटेक्ट, लाइक हाउ कैन यू बी ऑल राउंडर सर? ये कैसे कर लेते आप? Sir, I don't think I am an all-rounder at all. Yeah, of there are course, so many sir. shortfalls. Maybe I am good at hiding it. सर, जो भी फ्यूचर आर्किटेक्ट्स है नासिक के, या जो भी यंग डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, वो वन लाइनर क्या रहेगा आपके तरफ से उनके लिए? व्हाट विल बी दैट वन लाइनर दैट उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? Be honest in your profession. ओके. So if I am designing, I design it honestly. I am advising, I advise honestly. I am consulting, I consult honestly. Put my best foot forward for each and every client who is there. Whether he is a small one-room kitchen guy, or maybe he is building a villa, or maybe he is building a city. The amount of input for each project has to be honest and complete, 100%. दैट्स कम्प्लीटली अग्रीड सर, बिकॉज आप जितने भी बार आते हैं आपके क्लाइंट्स को लेके या आपके डिज़ाइन के बारे में जो आपने बताया, every time you be at our store, we observe this, and we have observed this thoroughly, that your design and your architecture and your client, ये सब जो आप बोल रहे हैं, your honesty that speaks in your design, your work, और जो आप बोलते हो वही आप करते हो, ये हमने भी ऑब्जर्व किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हैविंग सेड दैट, सर, विनियर एज अ प्रोडक्ट, विनियर एज अ थिंग, पूरे घर में आप क्या उसको मायना देते हो और उसको क्या वेटेज देते हो? इन योर एंटायर प्रोजेक्ट, व्हाट विनियर प्लेज द रोल? Very important. And I start with single words like very important. Why? Because it's not only what I'm going to see, it's what I'm going to feel. Right. First part. And it gives me a connection with the nature. It's as simple as that. It is not synthetic. The moment you talk about synthetic things, I am not degrading other materials, but I am just trying to evaluate that the moment I say veneer, it is something like, I am touching myself with the nature, which will remain with me in the maximum period of my lifetime. Because अगर मैं घर की बात करूँ, बंदा कितना भी काम कर ले, जी, even if I am quoting the richest man in this world, right, he will be in his house for minimum 1/3 of his lifetime. राइट. 100 साल बंदा जिएगा तो 33-35 साल तो घर में है, क्योंकि घर आज में। 24 घंटे में से 8 घंटा तो उसको घर में रहना ही राइट रहना. राइट राइट. And other things are, then spread out in different things. So the moment when 1/3 life is connected with something,
it has to be something which is close to me, my heart, my feel, my aesthetics, right? I would even say sometimes you can smell also that flavor, that aroma Right. of wood, Right. which will ground you and at the same time connect you with these 5 elements. It is one of the elements of earth. That is how I put veneers to. That's really amazing, sir, to hear you. And it was a great, immense pleasure. ऐसा लग नहीं रहा है कि इंटरव्यू खत्म हो and ये chit chat खत्म हो. But we have really enjoyed the knowledge you shared, the things you told us. And last but not the least, I'll ask you one thing, sir. Apart from design, apart from architecture, what is your hobby? Long drives. Okay. Sir, you're working in Nashik from so long and इतना काम करने के बावजूद हम लोग पिछले 10 साल से मिले हैं एक दूसरे से and we are working together. I want to just ask you one thing कि हमसे काम करते वक्त या जब भी हम लोग आपके लिए कुछ नया प्रोडक्ट लाते तो what is the suggestion या feedback for Elegance Veneers from you, sir? Suggestions की जगह पे मैं feedback देना चाहूँगा. Sure. Certainly. I distinctly remember the first time I had dropped into your place to buy veneers for my client in Pune, Right. if I am not wrong, Right. right? That was some other showroom. Right. From that day till today, what I appreciate about Sushant, and I have been talking to my team also, my wife, as I told you, and other people also, that I understand Elegance Veneer has a very good standing in the market. But Sushant is elegance. I am not here giving you all those wings under your this thing. Right. But frankly, whatever has happened is, I have seen that even if you are not here and I just give you a call that Sushant, I want to drop by with a client and all. If you are in the city, you will see to it that you rush back to the town, rush back to the showroom and, service us, show us all the things. And in case you are not in town, you make it sure to keep on calling your team. Sir को ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये दिखा दो. That is the involvement. I appreciate the innovation you bring in, right from your lime plasters and your curated veneers and those other laminates, which you all call it as a designer laminates and all these things. They are really very good. It comes here first and then maybe it is copied by the market. These are the 2-3 things I would certainly say that yes, Elegance could be considered as a market leader here in this part of the city. It really means a lot, sir. And I want to say one more thing on the other side. The hard work which we do, the things which we play here is just because that we want to make guys like you happy and satisfied. And we really work hard and we will work hard in near future कि हम लोग आप ध्यान रख सके एंड आपको कंटिन्यू नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशन एंड नया सब चीज़ दे सके. आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू सर ऑन दिस स्पेशल डे ऑन दिस शो. Thank you so much for being part of this Aki Chat show, sir, and we look forward to work for you and give you more such things in future. Thank you so much. It's a Thank pleasure. you.